the next is vesicular structures. Vesicular structures is like vesicles. Okay, it is similar to your protoplast or spiroplast. You will obtain this very vesicular structures from the protoplast or spiroplast. Okay, so इनके बारे में स्टडी सबसे पहले रोनाल्ड केबक इन्होंने किया था, which is associated as the Roche Institute of Molecular Biology in New Jersey, USA. Okay, this is the research institute. What they did, they obtained this vesicular structures उन्होंने बनाया था from the protoplast or spiroplast, and they used these particular vesicular structures for studying active transport. Now, active transport is a type of transport. We will learn about the detail in the upcoming topics, okay, about active transport. So let's first understand what was the characteristics of this vesicular structures. It was having 0.1 to 1.5 micrometer in diameter, a little bit smaller than a normal bacterial cell. You can have these vesicular structures bounded by plasma membrane. जैसे कि आपका प्रोटोप्लास्ट और स्पिरोप्लास्ट था, जब हमने उसका सेल वॉल निकाल दिया तो क्या हो गया था, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गया था. सिमिलरली दिस स्ट्रक्चर विल आल्सो हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग लिटिल ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. तो डिफरेंस क्या है कि इन प्रोटोप्लास्ट एंड स्पिरोप्लास्ट इट विल हैव ऑल द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. साइटोप्लाज्म में जो भी रहेगा सब कुछ रहेगा, इंटैक्ट होगा, बिकॉज ओवर देयर वी जस्ट रिमूव द सेल वॉल. But here we can see very little cytoplasmic contents are there. Okay, and then most importantly, this particular vesicular structures are osmotically active as your protoplast and spiroplast. Osmotically active मतलब वहाँ पे transport हो सकता है by osmosis. There is something called as osmolarity which functions here. Osmolarity is studied in the first topic itself, where we understood that solute के concentration के हिसाब से osmotic pressure होता है. So the same thing is also working in the vesicular structure, and we can use this vesicular structure instead of protoplast and spiroplast for studying the transport. Okay, so let's move ahead and now understand how exactly these vesicles they prepared. Okay, प्रोटोप्लास्ट और स्पिरोप्लास्ट दिखने वाले वेसिकल्स उन्होंने एग्जैक्टली बनाए कैसे थे. Okay, first what they did, they grow the bacteria. So normally हम grow कैसे करते हैं bacteria को, we inoculate in the medium. So similarly they have inoculated the bacteria in the medium. One more additional task they performed, they inoculated the medium with penicillin. Now what is penicillin? Penicillin is an antibiotic produced by a mold called as penicillium. Right? Now what this penicillin does? Penicillin एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करता है. क्या करता है? You can note down somewhere. Penicillin blocks cell wall synthesis. Means if you have penicillin in the medium, it will not allow the cell wall synthesis. That exactly how the drug penicillin works. So if this penicillin was administered to patients who are suffering from infections, right? So what it used to do, once the penicillin enters the host, it is going to search for the bacteria और उसके जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, और जब वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, okay, when it goes for cell division, the new cells which are formed will not have cell wall because of the presence of penicillin, and those cells can be easily destroyed. Okay, so that is the mode of action of this antibiotic penicillin. तो हम क्या करेंगे? We will grow the bacteria in the medium. Okay, just imagine this is a conical flask with a cotton plug. Okay, so we have in the medium, let's say for growing the bacteria, we have added nutrient broth in the medium. ठीक है, मीडियम में हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ वी आर इनोकुलेटिंग आवर बैक्टीरिया. लेट्स टेक ई कोलाई ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और बेसिकली यू कैन टेक ग्राम पॉजिटिव. लेट्स टेक लेट इट बी स्टाफाइलोकोकस. ओके, बिकॉज सेल वॉल
mainly those organisms have very high thick cell wall, right? So that's why Staphylococcus aureus हमने लिया यहाँ पे और हम grow कर रहे हैं. Now along with the medium, what we are going to do, we are going to add this penicillin. Okay, this, let me see, these particular dots represent penicillin. So now when this cell undergoes cell division and starts growing, the cell wall will not be synthesized. ठीक है, सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगा. उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सेल्स मिलेंगे, इधर से जो भी आपको सेल मिलेगा, those cells will not have cell wall, they only have the plasma membrane and they will have the cytoplasm. Okay, so they will not have cell wall. So this is done to remove the cell wall. Okay, now what if you don't have penicillin और आप पेनिसिलिन यूज नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेनिसिलिन ज्यादा करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज दोज बैक्टीरिया ओनली हैव अ थिक सेल वॉल. करेक्ट. नाउ व्हाट कैन बी डन, you can either incorporate penicillin in the medium of the growing bacteria, or you have one more method. You can take the growth bacteria को अच्छे से न्यूट्रिएंट डोज में ग्रो कर लेना. उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी ग्रो हुआ जो बैक्टीरिया है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा और आउटर सेल वॉल भी होगा, राइट. सो व्हाट वी विल डू, we will treat that particular bacteria with a compound called as lysozyme. Lysozyme is an enzyme. Okay, it is present in lysosomes. Okay, lysozyme is an enzyme present in lysosomes. So you can treat it with this lysozyme enzyme, or else you can treat it with EDTA. Okay, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. So EDTA is a detergent. Detergent की तरह काम करता है जिससे सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा. Fine. Either there are two options. Either you grow the bacteria in penicillin, जिससे सेल वॉल सिंथेसिस होगा ही नहीं, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगा ही नहीं, या फिर आप क्या करो, जो बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल है, you treat that with lysozyme or you treat that with EDTA. Both the process, what happens in both the process, the cell which you get after this process will not have the cell wall. In the next step, you are going to subject your bacteria to osmotic lysis. Osmotic lysis करेंगे in a suspension. For lysis मतलब you are going to break open the cell. So once your cell is broken down, आप वो जो सस्पेंशन जिसमें हम सेल को ब्रेक कर रहे हैं उसमें हम क्या डालने वाले हैं, वी आर एडिंग टू एंजाइम्स. वी आर एडिंग टू एंजाइम्स टू दिस, एंड दैट एंजाइम्स आर deoxyribonuclease and ribonuclease. So you will have your deoxyribonuclease which will act on your DNA, and you will have your ribonuclease which will act on your RNA. ठीक है. तो हमने क्या किया, जो सेल यहाँ पे जो हमारे पास सेल था जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उसको हमने एक ऐसा मीडिया में इनोकुलेट किया जिसमें ऑस्मोटिक लिसिस हो गया और आपके सेल जो है, देखो सेल ब्रेक हो गए, इट बिकम पीसेस. सो नाउ व्हेन इट बिकम पीसेस, एवरीथिंग इनसाइड द सेल इज गोइंग टू कम आउट along with the DNA, RNA, etc. So जो ये DNA रहेगा, so let me see this red one is DNA. We don't want this DNA. Okay, हमें ये देने की जरूरत नहीं है, तो हमने ये मीडिया में क्या कर दिया, हमने डाल दिया है एंजाइम कॉल्ड एज deoxyribonuclease and ribonuclease, जिसकी वजह से आपका DNA और RNA डिस्ट्रॉय हो गए. ओके, सो वी हैव डिस्ट्रॉयड योर DNA, वी हैव डिस्ट्रॉयड योर RNA. Fine, we have destroyed DNA and RNA, and now what we will do next, we are going to then resuspend in a suitable buffer. अभी हम जो भी यहाँ पे हमें मिला था चीजें, what all things which we got here in this, after breaking open of the cell, whatever you have break open this cell, then what happened, every contents of the cell came out, and now we have destroyed the DNA, RNA. अब हम उसे क्या करेंगे, एक और ऐसे बफर में डालेंगे. We put it in a suitable buffer. Where what is going to happen in that suitable buffer is the bacterial membranes जो ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ पे membranes के पीसेस बन गए ना membranes के, this will reseal. Reseal मतलब वापस सील होगा. पहले तो सर्कल शेप में था, फिर हमने जो उसको ऑस्मोटिक लिसिस किया वो इस तरह से ब्रेक हो गया पीसेस में.
फिर जब हम उसको एक suitable buffer में डालेंगे, it will again reseal and it will form a vesicular structure. बट अभी डिफरेंस क्या होगा? इनिशियल जो हमने यहाँ पे लिया था, इसके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, डीएनए, आरएनए सब होंगे. जब हमने ब्रेक किया, सारे कंटेंट्स कहाँ आ गए? सारे कंटेंट्स ये सोल्यूशन में आ गए और उसमें से जो डीएनए, आरएनए वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है. फिर जब हमने बफर चेंज किया, so when we change the buffer, your membrane is also again going to reseal. So this membrane will again form, but now they will not contain all the cytoplasmic contents. They can contain very few cytoplasmic contents, but they will not contain all the cytoplasmic contents. So thus we get these vesicular structures. They got something which is similar to protoplast and spheroplast. But क्या है ये कुछ चीज ऐसी चीजें जो artificially बना है. Now the mechanism of resealing, when we discussed about the lipid bilayer, over there I told that the lipid bilayer can spontaneously aggregate. Yes or no? जैसे ही उसको एक suitable buffer मिल जाता है, अपने आप bilayer बना देगा and then it will again form the vesicular structure. So no extra effort. Okay? So this entire thing is done to remove the cytoplasmic content which was present in the protoplast and spheroplast. So what are the applications? You can study the uptake of solute by these vesicles in the same way as with intact cells. The way you used to study with intact cells, whole cells के साथ जैसे हमने study किया था, same procedure you can use these vesicles also. Okay? And the main advantage of using this vesicle is the availability of energy sources for the uptake process can be controlled. See now inside the cell there is nothing. There is even the ATP या फिर जो भी energy का source होगा that also came outside, right? So now everything is now in your control. Nothing is inside the vesicles. Vesicles में जो भी चीजें सब बाहर आ गए. Now if you add these vesicles in a tube containing solute, all things are under your control. आप अब study कर सकते हो कि उसका energy source क्या होगा. You add ATP in the medium and see if solute transport takes place. If it takes place, it means ATP is the energy source for the transport. Or what you do, you don't add any energy source and check whether uptake takes place. And if uptake takes place, then what you can conclude? You can conclude that जिस particular solute का uptake के लिए आपको energy की जरूरत नहीं लगता है. So see, you can study everything, things are in your control. And thus you can study also the nature of the molecule which serve as a source of metabolic energy. अपटेक प्रोसेस के लिए which molecule energy source दे रहा है वो भी हम study कर सकते हैं when things are in your control. That is the most important advantage of using vesicular structures for studying solute transport.